Hello everyone, today I am going to start new chapter of biology for class 9th, that is chapter 3. The name of the chapter is tissues. So let's start a new chapter without wasting our time. Here we have the definition of tissue. Group of cells which have specific structure, position and function are called tissues. इथे group है cells ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ specific structure ਵੀ ਹੈ, position ਵੀ ਤੇ function ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ tissues. ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ एग्जाम या टेस्ट विच 2 नंबरों का 1 नंबरों का तो डेफिनेशन के नाल तुसीं लाइन जरूर लिखनी है. फर्स्ट इज सेल फॉर्म टिशू, दैन ऑर्गन सिस्टम, दैन ऑर्गेनिज्म. ठीक है जी. तो टिशू 2 तरह के होंगे ने, 2 टाइप्स, प्लांट टिशू एंड एनिमल टिशू. आपां सिर्फ प्लांट टिशू बारे पढ़ांगे. सो प्लांट्स ते एनिमल्स बारे मैं 2 पॉइंट्स दसन जानी है. इत्थे ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने वो स्टेशनरी ने, ਉਹ एक ही प्लेस से रहते हैं, दूजी प्लेस से नहीं जाते. तो ਜਿਹੜੇ एनिमल्स ने वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर फॉर सर्चिंग फूड एंड शेल्टर. मीनस टू से दैट आई एम रिपीटिंग, ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने वो स्टेशनरी ने, वो एक ही जगह पर रहते हैं. तो ਜਿਹੜੇ एनिमल्स ने वो मूव करते हैं एक जगह तो दूजी जगह पर अपना फूड ਲੱਭਣ वास्ते तो शेल्टर ਲੱਭਣ वास्ते. तो ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने ऑटोट्रॉफिक ने, तो एनिमल्स ने हीटरोट्रॉफिक. ਜਿਹੜੇ प्लांट्स ने अपने आप डिपेंड रहते हैं, साढ़े ते डिपेंड नहीं रहते. ਜਿਹੜਾ अपना फूड है वो आप प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसैस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपने ते डिपेंड नहीं रहते, वो अपने आप ते डिपेंड रहते हैं. तो ਜਿਹੜੇ एनिमल्स ने वो साढ़े ते डिपेंड रहते हैं फूड वास्ते भी ते शेल्टर वास्ते भी, क्योंकि असी दोनों चीज़ा एनिमल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्लस शेल्टर भी. सो दैट्स वाई प्लांट्स आर autotrophic and animals are heterotrophic. They are depending on their own and they are depending on us. So here we have the difference of plant tissue and animal tissue, but we will leave this difference because as I already told you that we will do only plant tissue and we are not doing animal tissue, so we will leave this difference. If you want to read the points of plant tissue, so once I reading, these are simple, only these are simple, these are stationary, and one more point you can write by yourself, these are autotrophic. Yes, these are most of the dead tissues are divided into 2 meristematic and permanent tissue. This we will read here now. Further, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨੇ, plant tissue, meristematic ਤੇ permanent ਵਿੱਚ. ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ग्रो होंगे ने, इन्हों लैस एनर्जी चाहिए है. ये ने अपने पॉइंट्स प्लांट टिश्यूज से. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टिश्यू, दैट इज प्लांट टिश्यूज. दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, सो डोंट बी शॉट दैट दिस इज टू मच एंड वी कैन नॉट लर्न इट. इट्स टू ईजी एंड इफ यू विल डू, you will learn very properly throughout the year. You will never forget this then. So please listen me once I will read this, and after that as your choice in how many parts you have to brought it. You can break down into 2 parts, 3 parts, so as your wish to learn. Then when you have learned fully, then you will definitely not forget from your mind. So once I read, plant tissue are of 2 types, meristematic and permanent. Meristematic are of 3 types, apical, lateral, intercalary. Permanent are of 2 types, simple, complex. Simple is of 3 types, parenchyma, collenchyma, succenchyma. Succenchyma is of 2 types, fibers and circulates. Complex are of 2 types, phloem and xylem. These have 4 types further. Phloem, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. Xylem, tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Understood? So this is a flow chart. Once I read, so now as you wish in how many parts you have to brought it for learning. Now let's further with our first type, that is meristematic tissue of plant tissue.
So here is the definition group of living cells. ए भी ग्रुप है, ग्रुप है लिविंग सेल्स का, टिश्यू भी ग्रुप है लिविंग सेल्स का, ए लिविंग सेल्स का ग्रुप है विद द एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म न्यू सेल। फॉर्म करते हैं, न्यू सेल फॉर्म करते हैं, उन्होंने आप बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेयर some are of characteristics of meristematic and most are confusing in characteristics and functions. Now I am telling this difference. Where question comes characteristics, then most are writing functions. If functions same, most of are writing this. So what is the difference? Characteristics means ट्रैक्टर, ਉਹਦਾ ਕੀ ट्रैक्टर है, जिवें अपना ट्रैक्टर की है, ਆਪਾਂ ਬੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਰਲ ਆ। ਯੈਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। ਸੈਲਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ। ਹੈਵਿੰਗ ਥਿਨ ਐਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸੈਲ ਵॉल। ਥਿਨ मोटी सैल वॉल है, ये जी बार वाली हैगी है, ये सैल वॉल है, ठीक है जी। मोटी है तो इलास्टिक है, किस तो बनी हुई है, सेलुलोज तो। नेक्स्ट चीज, सैल्स आर राउंडेड, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर और ओवल। ये तीनों शेप्स ने, तो जो सैल है वो राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी, रेक्टेंगुलर भी ते ओवल भी हो सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेस है जो वो एबसेंट है, इन्होंने थोड़ी स्पेस तो नहीं हैगी ना, नाल अटैच ने। सो जी इंटरसेलुलर स्पेस है वो एबसेंट है, इंटर मीनस अंदर वाली स्पेस जो है वो एबसेंट है। ईच सैल हैज़ अ लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इन्होंने सारे थोड़े की लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जोड़े ब्लड वाले ने ना, ये तीन न्यूक्लियस ने, वड्डे न्यूक्लियस ने इन्होंने थोड़े। So cells have the ability to divide repeatedly, which we have read in the upper side in the definition also. So 5 points are enough. I have leave this point. Understood? So these are the characteristics of meristematic tissue. Now here are types of meristematic tissues. As we know that there are 3 types of meristematic tissues: apical, lateral and intercalary. So see the diagram here. It is a diagram. Apical meristem is located on the top of the plant and it is also known as the primary growth. Here it is also written, this is called primary growth. I repeat, apical meristem is located on the top of the plant and it is also known as primary growth, and it increases the height of the plant. ठीक है जी, this is only in apical meristem. And the next is lateral meristem. It is located at the bottom of the plant and it increases the stem and roots of the plant. This much only. And the last is our intercalary. This is it is located at the bottom, at the middle of the plant and it increases the leaves of the plant. This much only. I didn't read these paragraphs, so I made by myself. My wording are easy, so listen me very carefully. I will repeat these 3 points again. My wording is easy, better than this. Understood? I repeat. First is apical meristem. First is apical meristem. So first point you can write, it is located on the top of the plant. Second point, it is also known as primary growth. And the third point, it increases the height of the plant. This much only.
And the next is lateral meristem. First point lateral meristem, that it is located at the bottom of the plant, and it increases the stems and roots. And the last is intertillary meristem. It is located at the middle of the plant, and it increases the leaves of the plant. This much only. Understood? If there is any doubt, query, please send your message in chat box. I will clear it very carefully. Our today's last topic is functions of meristematic. ਹੁਣ ਉਹ perform ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਇਸੀ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਲੀਵਸ, ਨਿਊ ਲੀਵਸ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ, branches of stem and roots, flowers, fruits, etc. ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੈਲ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਲਪ ਦ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸਟੈਮ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਐਂਡ ਗਿਰਥ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰੂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਂਥ ਵੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਐਂਡ ਗਿਰਥ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੋਪਿਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਰਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। Understood? Our half topic is pending of plant tissue. We have done today these 3 parts only. First, we have learned the definition of tissue, then 2 points of plant and animal, then I read this flow chart, then we have read this meristematic tissue fully. So we have done up to this. So this is our today's topic. If there is any doubt, query, please send your message in chat box. I will clear. Thank you and have a nice day.